final slot. Two clubs in contention, and the winner takes it all. Welcome, folks, once again. You're watching the eISL Season 2, brought to you by Nodwin Gaming as we head on to the final fixture of this evening, a decider. This is again going to be a clash between the Titans. We have on one side Chennaiyin FC taking on Kerala Blasters FC on the other. And this is going to be an absolute cracker of a game. And let's not wait any further, TT. Let's just find out who goes against who. जी हाँ बिल्कुल। और उसी के साथ देखिए ये डिसाइडर जो है तो दोनों ओजीज एक दूसरे के साथ भिड़ने वाले। सबसे पहले नवीन एंड लोकमान्यु एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, उसके बाद कटाउन वर्सेस शुभम तमतम। तो आज के दोनों मैचेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि लोकमान्यु की अगर बात किया जाए पिछला गेम पिछले दिन काफी अच्छे खेले थे केरला ब्लास्टर्स। एक टाइम के लिए लग रहा था कि शायद वो रेस के बाहर हो जाएंगे, बट पिछले गेम पे एटीकेएमबी को हरा के वापस आए, 3 पॉइंट्स लिए और अभी क्वालिफिकेशन के लिए रेडी होके बैठे हैं। तो क्या वो इधर हरा पाएंगे, क्या वो इधर चेन्नई को रोक पाएंगे? क्योंकि चेन्नई के लिए देखिए अभी तक वैसे तो उतना ज्यादा वो हारे नहीं है, बट उतना ज्यादा वो जीते भी नहीं है। और अगर आज वो ड्रॉ करके जाते हैं एंड वो भी उनके लिए काम चल जाएगा। सो उनके लिए तो सिनेरियोस थोड़ा बहुत कंफर्टेबल है, बट केरला आई डोंट थिंक कि वो कोई भी वैसा मौका देना चाहेंगे चेन्नई को। Yeah, especially when you have two really ravishing players in your club. You've got Lokmanyu, who's certainly sort of regained his lost form that was kind of continuing even in those closing phases of eISL, and with the beginning of this one also in Season 1 to Season 2, that transition had been difficult. But I think Lokmanyu is back to his senses, where Shubham, I think, has been in contention of being one of the highest goal scorers. I'm pretty sure he has taken that rather more tougher task to go up against Tikka. But on the other side, when you look at Chennaiyin FC, Tikka has been ever so consistent. He's that one constant in that equation you can't change, right? Tikka, he's going to be absolutely amazing. But the variable has to be our defending champion, Naveen himself. Naveen, he's been going through a really tough time. He's an amazing player. We have seen him perform on land. We have seen him do wonders. But can he manifest, those powers of the past? Can he somehow, channel his inner sleeping demon tonight when it all matters? Can he taste glory? That's the big question. A huge, difficult task lies ahead of him. That is going to be beating Lokmanyu. Considering how his form has been, well, it's on the cards. Anybody could become the victor, and the winner, like I said, takes it all. There you have it, Chennaiyin FC versus Kerala Blasters FC. It is already kickoff. Chennaiyin FC in their whites, represented by Naveen from left to right. And then you've got Kerala Blasters FC from right to left by Lokmanyu in the black jersey. फाइनली शुरू होते ही इधर जड़ चुके हैं गोल। नवीन जिस टाइम पे जरूरत था सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की, उसका आगाज हो चुका है। गोल के साथ शुरुआत कर चुके हैं और लोकमान्यु जस्ट खड़े रह के देखते रह गए। और सिर्फ वही नहीं, उनके वेंडेसार भी, क्योंकि जिस जगह पे प्लेस किया गया था ज्यादा मौका था नहीं। गेम शुरू होने के 4 मिनट के ऊपर ये गोल आया। कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बिल्ड हुआ होगा, लेकिन एक गोल का फासला हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ डिसाइड करने वाला है। लोकमान्यु शायद इधर एक कमबैक दिखे, और इसके पहले भी करके दिखाए हैं, तो नवीन को देख के इधर डिफेंड करने की जरूरत है। The usual trait with Lokmanyu was he always scores a goal, then concedes one. But this time, the narrative is different. This time, Naveen has struck first. And it was a quick one, right? The first attack of this game, and he converts. Now, this is exactly the Naveen that we wanted to see, right? Who comes in, has that fiery fist, just throws out a punch, and suddenly it's a knockout. And at this point, Lokmanyu needs to recover. But Naveen, look at how collected he is. Look at how composed he is. He's taking all the time in the world to build that play up. He's not being impatient. He's not being reckless there. No, he's trying, just to constantly chain the ball and pass it. Because the previous one,
No, it felt like Lokman just casually conceded one and showed no interest in trying to go for the defense and was kind of caught off guard. Maybe something with the player switching or whatever the case might be. He is one goal down. And this is where Lokman needs to understand that this is a match which they are ought to win. They cannot take it to co-ops. They cannot take it to the final matchup. So Kerala Blasters FC, if they need to find that opener, this has to be for them. But if Naveen continues this sublime form right now with that one goal, if he makes it 2 and then makes it 3, then skies might fall down for Kerala Blasters FC. अभी के लिए जो सिनेरियो बन चुका है इधर से लुकमान को जीतना ही होगा, क्योंकि पिछले गेम पे भी हम देखे हैं जब आप पहला गेम हार जाते हो उसके बाद आपके कंट्रोल के बाहर चला जाता है बहुत कुछ, प्रेशर 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, तो जाते जाते एटलीस्ट एक ड्रॉ भी अगर करके गए तो भी काफ़ी है, लेकिन हार के बिल्कुल नहीं जाना है। ऑन द अदर हैंड नवीन, उनके बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा होगा कि बहुत हो चुका है हारना, बहुत हो चुका है ड्रॉ, अभी है जीतने की बारी, और उसी तरीके से शुरुआत की है। प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा था, उसका आउटकम भी आया, लेकिन इस बार बॉल कंट्रोल है ब्लास्टर्स एफसी के पास। बेलिंगम टुवर्ड्स हकीमी, धीरे धीरे करके बिल्डअप ऑलरेडी इधर बीचों बीच पहुंच चुके हैं एम्बापे, बट रोनाल्डिनियो को खिलाया गया टुवर्ड्स रोनाल्डो, जगह बन चुका है वन डाइक के साथ। शानदार, ये डिफेंस था एकदम ऑन पॉइंट था, नहीं तो ये गोल होता हुआ दिख रहा था मुझे। Yeah, I think he was opting for maybe an elastico or reverse elastico and wanted to create that space and take a shot. But unfortunately, that did not happen for Lokman. But kudos for him trying to build up an attack. But Naveen has been looking sharp this time. He's not letting his defense open up. Oh, that could have gone all wrong. But thankfully, Naveen sort of makes that rescue. And Lokman is denied of the equalizer. At this point, Naveen, I had a quick chat with him the morning. I was kind of concerned about his run of form lately. Then I asked. In fact, it was a message from his side where he kind of expressed his thoughts on how things were going out. Lately it's his servers that have been acting up. Hasn't been getting the best of pings compared to the players, right? Especially when it's an online event. That has always been one of those factors. And playing FIFA so much, we both understand, TT, that even a single millisecond of a difference, and that even in 0.30 seconds, that one player switch could create a heaven and hell difference, right? And this is one of those reasons for which we've seen Naveen struggling a lot. Because even I was wondering, imagine, TT, a player who's gone on to be crowned as the champion, suddenly in the second season, it all comes falling down. That was so hard to digest for me. Getting that little clarity, it's quite understandable for what Naveen's going through. But, he's just one step closer, because the moment Chennaiyin FC win this matchup, or even if they get a draw, we're going to see Naveen in land. And once Naveen is in land, TT, you know what's ought to happen, because he's again, look at that, he's broken free for yet another attack, but taking his sweet time to build it up. Rudholit with Zinedine Zidane, with Ronaldinho will take a direct shot, but still up for getting poached. But Lokman quite sturdy on his defense. आज नवीन को देख के बहुत ज़्यादा सही एक मोमेंटम में दिख रहे हैं, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से बैक टू बैक वो अटैक इधर करते जा रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और वो जो है वो कंटिन्यू करते हुए दिख रहे थे। बट एज ऑफ नाउ लोकमान्य की तरफ से कोशिश था कि वो राइट हैंड साइड से एक रन निकाले, ओवरलैप पे जाए विद हकीमी, बट वो होने नहीं दिए। बच गया इधर फर्स्ट हाफ का विसल, और उसी के साथ फर्स्ट हाफ का स्कोर लाइन अभी 1-0। बट नवीन, आई थिंक वी नो कि वो अभी तो थोड़ा बहुत टेंशन में अभी भी है। वो बिल्कुल भी क्वेश्चन पोजीशन पे तो नहीं है, तब तक उनको थोड़ा बहुत तो टेंशन रहेगा जब तक कि वो दूसरा गोल नहीं दाग देते, क्योंकि एक गोल का फासला भी नो, और इसके पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग, जब खेलते भी है खुद से तब भी दिखता है कि एक गोल का फासला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये दूसरा गोल बहुत जरूरी है। बट ऑन द अदर हैंड केरला ब्लास्टर्स एफसी
उनके लिए वो पहला गोल ढूंढना ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी तक एक शॉट लेने का मौका उनको नहीं दिया गया है। And this is a point where I think we have to consider the prospects in front of us, right? Let's say Naveen wins this game, then they're one step closer to victory because all they have to do is just sort of either get a draw or win their co-op game, and then Shubham literally will be fighting for nothing. No matter even if he defeats Karmantika, Kerala Blasters FC still won't qualify because Chennaiyin FC. I think we've discussed this even earlier in the a pre-segment where even a draw for Chennaiyin FC out of this fixture is enough to make them qualify for the playoffs. And when you have players like Naveen, the champion of season 1 eISL, when he's teamed up with Kaman Tikka, the grand finalist of eISL season 1, this is where you could just say that you would want to have this club with you. But on the other side, when you look at Kerala Blasters FC, two of the biggest personalities of their community, Lokmanu coming in with all that experience, and then we've got Shubham, that raw aggression. Still always, I've considered him the Randy Orton of the ISL. Always comes up with that spice, that drama that everybody expects, and you know you would also want them in land. And this is such a tough choice, just being mere spectators for us to make because literally you're trading off one aspect with the other. But it comes down to the players. They have to win their games, and off we are off with the second half. So TT, it's just that one goal advantage. You said that for Lokmanu, he's one of those players who can make a comeback. But what does he need to do in order to score a goal against a very good Naveen right now? आई थिंक चेंजेस की ज़रूरत है, प्रॉपर कंट्रोल की ज़रूरत है, जो फिलहाल के लिए नवीन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, हालांकि बीच में इधर एक मौका मिल गया था जिस जगह से कहने की एक गोल आ सकता था, बट अगर आप थोड़ा सा नवीन के स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देंगे, जब वो डिफेंड करते हैं तो वो ज़्यादा अपने डिफेंडर को जो है वो मूव नहीं करा रहे हैं, जो कि यूजुअली हम लोग देखते हैं प्लेयर्स कराते हैं, वो ज़्यादा मूव नहीं करा रहे हैं। तो लोगों को इधर ये देखना होगा कि कौन से जगह से वो निकल सकते हैं और उनको कंफ्यूज करना होगा। वो जिधर जाके बॉल पासिंग कर रहे हैं एकदम जस्ट बॉक्स के बाहर, वो अगर थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं उस लाइन को तो वो शायद उनके लिए काम आ जाए। बट अभी के लिए नवीन वो प्रॉपर खोलने की कोशिश कर रहे हैं लोकमन्नू को, उनके डिफेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लो ब्लॉक पे थे, बट फाइनली बॉल छीना जाएगा, बट इधर एक गलत पास। और जब आपको एफिशिएंट होने की जरूरत है उस जगह पे आप तो गलत पास बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपको जरूरत है, आपको एक गोल स्कोर करना है। देख के एक गोल लग रहा होगा, हम लोगों ने कहा भी एक ही गोल है, लेकिन वो स्कोर करने के लिए जो कर रहा है स्कोर, उनको उतना ही एफिशिएंट होना पड़ता है ताकि वो एटलीस्ट एक गोल तो स्कोर कर पाए। तो पासेस जो है वो एकदम ऑन पॉइंट होना चाहिए, लेकिन नवीन के जो पासेस हैं देखिए वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और यही चीज जरूरत है। उनके जो पासेस हैं वो धीरे धीरे लाइन पुश कर रहा है। इस बार मौका भी बना है बट वैन डाइक हाइट ज्यादा था तो बच गए। वही अगर शॉर्ट हाइट की इधर डिफेंडर रहते तो काम तमाम हो चुका होता। Yeah, but this is a really good break with Jairzinho. He's ought to surely score, and he does it. The man strikes back. And there you have it. Kerala Blasters FC have reason to hope. But this is where it should not stop as they have to score yet another goal. Somebody needs to score a winner out of this one. Both these players, as you can see, are desperately trying to get a win. And even, as being mere spectators, you would just want to see them going all out, them trying to get that W, them trying to just take it all because this matchup is going to be of the utmost importance because then we have a more clearer picture. And Lokmanu was trying a lot of things, right? He was trying to play from the wings. He was trying to constantly just keep the passing game. Usually that slower build up that he goes for, he saw that it's not working out, so he went for another variation in his attack. He went for that long through pass, and that is all that made the difference, triggering that run with Jairzinho. Once he got it, he knew that he cannot afford to bottle this one. Still keeping Kerala Blasters FC in contention of this game. Now it's all out in the open. Who's going to grab that winner? That is what we're going to be on the lookout for.
उसी के लिए हम लोग करते हुए वेट, फाइनली इधर शुरू हो जाएगा गेम। चेंजेस क्या क्या आए हैं वो भी इधर देखना जरूरी। 64th मिनट के ऊपर ये पॉज लिया गया था, सो आई थिंक फ्रेश लेग्स में भी इधर देखने के लिए मिल जाए। यस, मिलेगा। यूसीबीओ आते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, उसी जगह पे हर्नांडेज भी आएगा एंड हम लोगों को एक और न्यू प्लेयर शायद चेन्नई की तरफ से देखने के लिए मिल जाए, बट नो, चेन्नई एनएफसी अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से ही सिर्फ 2 चेंजेस आते हुए दिखे हैं, क्योंकि केरला ब्लास्टर्स एफसी वो आज बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको जीत के खत्म करना है, ड्रॉ के साथ नहीं। चेन्नई एनएफसी ऑन द अदर हैंड, वो अगर ड्रॉ पे भी खत्म हो जाए तो भी उनके लिए काम चल जाएगा। सो लोकमान्य कोशिश करेंगे कि वो इधर एक विन के साथ एंड करे, बट नवीन का आज पेशेंस जो है वो पेशेंट लेवल काफी अच्छा था, बट उसी जगह पे एक गलत पास के थ्रू बॉल लूज कर गए, जिसकी वजह से अभी के लिए तो बॉल है लोकमान्य के पास। बट लोकमान्य एज ऑफ नाउ जिस तरीके से उन्होंने गोल स्कोर किया था काउंटर के ऊपर, वो काफी अच्छा था, बट काउंटर छोड़ के बिल्डअप जो है उतना खास हो नहीं पाया है। सो बिल्डअप जरूरी होगा, क्योंकि बार बार काउंटर पे चांस शायद नहीं देंगे, और अगर मिल गया तो बहुत सही, अगर नहीं मिला देन इधर विनर गोल ढूंढना इनके लिए टफ हो सकता है। क्योंकि देखिए इधर डिफेंस लाइन को देखिए एक बार, चेन्नई एनएफसी के 4 प्लेयर्स बिल्कुल भी हिल नहीं रहे, और कोशिश यही रह रहा है नवीन की तरफ से कि वो जितना ज्यादा हो सके फॉरवर्ड के प्लेयर्स को पीछे लेके आए, नॉट डिफेंडर। बट बीचों बीच वो नो नो, लोकमान्य वो खुद विश्वास नहीं कर पाए कि कैसे ये शॉट गोल पे नहीं था। Oh, TT, that's quite unfortunate, especially when this goal would have mattered the entire world for Lokmanu. Because, let's be honest, right now, this is one of those games where Kerala Blasters FC could have their strongest prospects of winning, right? Because the next 2 matches, they are going to be so difficult. It's a co-op, and Chennaiyin FC are a very strong co-op unit. And when you've got Karmantika and Naveen, oh, this has been such a huge, huge surprise. Out with a deflection, Naveen scores, and Chennaiyin FC one step closer to making it to the playoffs. This is a goal that neither of them saw coming, but it has happened. The drama, the late drama in the first matchup of this fixture. This is where surely it's gonna haunt Lokmanu. As you could see him, like, ये क्या है भाई, ये कैसे चले गया? And this point, this is where it all changes. And look at this. How on earth did this goal miss? And then Naveen utilizing that. A sucker punch, so much space for R9. Then Van der Sar, that deflection. This goes in, and that frustration coming out of Lokmanu. Quite evident and quite disdaining. जो चांस था लोकमान्य के पास, वो घूम के आया नवीन पे। कुछ इसी तरीके का सिनेरियो बना था जब लोकमान्य ने अपना पहला गोल स्कोर किया। नवीन उधर गोल स्कोर करने गए थे जिधर काउंटर पे लोकमान्य इक्वलाइज किए। तो देखिए सिचुएशन जो है वो बहुत सारा सा हो जाता हुआ केरला ब्लास्टर्स के लिए, बट अभी भी वो कुछ मिनट, 10 मिनट के आसपास बाकी, जिस पर एटलीस्ट एक इक्वलाइजर दागने की कोशिश तो करेंगे, करना होगा, दागना जरूरी है, नहीं तो सारा का सारा प्रेशर उनके कोऑप गेम एंड शुभम तमतम के ऊपर आ जाएगा, और वो उनके लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। इस तरीके से जाएंगे, क्या होगा रिजल्ट वो जस्ट 7 मिनट के अंदर पता चलने वाला है। रोनाल्डो, नो, हकीमी बॉल छीने, अभी भी बॉल है, बट बॉल कंट्रोल नवीन के पास है। नवीन विद एम्बापे टू रोनाल्डो, काउंटर पे जाने की कोशिश, देखिए पहले निकल चुका है लेफ्ट हैंड साइड से, इधर यूसुफ होकर एक पास, गलत पास, और गोल नहीं हुआ तीसरा। Yeah, and this could be the last and final attack for Lokmanu. He has to hit the hammer. He has to make sure it's in the right position. He needs to collect all the pieces, and he needs to score a goal to ensure at least
they have a better chance against Chennaiyin FC, and he's got that room with Eusebio. Certainly has to score. And the king of comebacks, we have seen Lokmanu do this in the past, and he's done it again. Certainly not the winner, but still keeping their club in race, their hopes alive with this equalizer so late into the game. But that still gives us yet one more attack for Naveen. Can he convert that? Suddenly, drama taking over. Suddenly, everything has changed. When Naveen felt like he was one step closer to victory, Lokmanu pushes it off and keeps it on that leveled playground. But TT, you know, both these players just going at each other, nothing separating them. Do you expect a winner from Naveen? टाइम देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये बहुत टफ है, लाइक ये एक ड्रॉ के साथ शायद खत्म होते हुए दिखे, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो ये गोल जितने भी आए हैं उसको कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ कर्मा, बिकॉज हम अगर देखें पहला गोल हुआ नवीन की तरफ से, वो तो बहुत सही था, लाइक नवीन का पहला गोल आया, लेकिन उसके बाद नवीन सेकंड गोल के लिए गए जब लोकमान्य के साइड पे उन्होंने ये गलती किया, जिधर लोकमान्य ने उधर काउंटर पे गोल कर दिया। देन लोकमान्य की तरफ से गोल आने वाला था जिधर विथ रोनाल्डो उन्होंने मिस किया, जिधर से वो खुद भी चौंक गए थे कि कैसे वो गोल पे नहीं था। वो मिस करने के बाद गोल आ गया अचानक से काउंटर पे फ्रॉम द साइड ऑफ नवीन, और इस बार फिर से नवीन ने मिस किया और गोल किया इधर लोकमान्य ने। सो क्या गेम था, क्या लाजवाब गेम था। आखिरी 1 मिनट चल रहा है, डिफेंस के पास बॉल है और मैच इधर खत्म है। तो अभी भी क्लाइमैक्स बाकी है और अभी भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा इस मैचअप के ऊपर। Yeah, I mean, this was a game of soccer punches, right? One player trying to score a goal, failing, then the other, scores one out of him. And yeah, at this point, Lokmani would be feeling quite unhappy, right? Especially with how that R9 goal went in. And if you look at Kerala Blasters FC conceding those 2 goals, it looked pretty lousy, right? Especially the first one. And even the second one that, Naveen scored. Lokmanu's defense was all over the place. Nobody guarding him. And yeah, it was a deflection from Van der Sar. It just went through. But still, you would look at those mistakes being made by Lokmanu. I do not know what was the issue, what was the case, but nobody was guarding. And then you could see, right, Lokmanu, this is where he found his first break and got that run beautifully with Jairzinho. Then he goes on to miss another chance, and that is when Naveen strikes back. And this was such a wholesome game and shows the quality of FIFA being played by these two players. And this one, I mean, 99% this goes in. And suddenly, when he takes that soccer punch in, look at that with Virgil van Dijk. There you go. That is where I think the read from Lokmanu was not in, and he was quite grumpy about it. And he also understood, getting Van Dijk back there was giving Naveen that goal away. But then, after conceding, he knew he had that one last chance and he wanted to make it count. This is where Naveen made that mistake. With Van der Sar, maybe if he would have just gone for that tackle there, would have interrupted it, stolen it away, done any other thing, then he would have been the victor. But yes, keeping things equalized, both these clubs. But this is at the very worst acceptable for Chennaiyin FC, considering they've got a very strong co-op unit and they've got Kamantika still out for blood, right? So Chennaiyin FC are pretty much happy, and they can also settle with a draw. But for Kerala Blasters FCTT, it is going to be very difficult. Now, taking a look at the scorecard, we will keep forward with our carrying on with our conversation also, because the co-op matchup is next. And we have seen Kerala Blasters FC being quite, left and right with their co-op. Some days you see that perfect synergy between the players, and sometimes it feels it's completely off. But on the other side, Chennaiyin FC with Naveen and Teka, we know these lads are very calm, very poised. They can control themselves and have been the better unit so far. So tonight, Kerala Blasters FC, they will have to
anyhow win this match. बिल्कुल. एंड सेम विथ कहीं ना कहीं चेन्नई एनएफसी एज वेल, क्योंकि चेन्नई एनएफसी अगर इधर से हाथ से निकल जाता है उनका ये गेम, देन जाके देखिए चेन्नई एनएफसी भी प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि पहला गेम किसी के तरफ गया नहीं था, और जब किसी के तरफ भी नहीं जाता तब आप आखिरी गेम तक नहीं बता सकते कि क्या वो इधर ड्रॉ पे खत्म होगा भी कि नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी तरफ जा सकता है। और अगर गलती से भी ये चला गया केरला ब्लास्टर्स की तरफ, देन चेन्नई एनएफसी वो सिर्फ ड्रॉ के ख्वाब देखेंगे, बट प्लेऑफ्स पे लैंड पे बैठे रहेंगे केरला ब्लास्टर्स एफसी। सो बहुत कुछ चांसेस है, बहुत कुछ होता हुआ दिख सकता है। और अभी तो मैं कहूँगा सारा कुछ डिपेंड कर रहा है ये कोऑप मैच के ऊपर। कोऑप मैच में अगर बात किया जाए तो चेन्नई एनएफसी और केरला ब्लास्टर्स एफसी दोनों के लिए ही सिनेरियोज उतना भी ज़्यादा खास नहीं था, बट उतना खराब भी नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल खराब है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है। तो आज जो गलतियां कम करेंगे शायद वो इधर जीतते हुए देखने के लिए मिले कोऑप, और कोऑप जो जीतते हुए देखने के लिए मिलेंगे उनके ओपोनेंट आ जाएंगे बहुत प्रेशर पे। सो बहुत कुछ देखने बाकी है। It was those thin margin of error, those small little mistakes that sort of decided the outcome of this game. Because both these players, you could see that hunger, you could see that desperation, wanting to win, and one little mistake. And this is where even Naveen's words, where those little delays, those little seconds. Because look at that last goal that he conceded, right, with Virgil van Dijk. Had the player switch been a little bit quicker, had he just positioned him in a proper fashion, then maybe Eusebio would have gotten that chance to score. And that is all it takes. At the highest competitive level of FIFA right now in India, to decide a winner. But yes, both these lads just went out, all lashing out on each other, and it was just an equalizer, nothing separating the two. But that will change maybe in the co-op. Chennai FC, they have been the favorite so far in a co-op matchup against Kerala Blasters FC. But a Kerala Blasters FC where we've seen Lokmanu gain his lost form, where we've seen Shubham scoring a lot of goals for his club, this is where they will have to put everything on the line. Because if they get through this hurdle, then it's going to be rather more breathable for Shubham in his final game. And tonight, well, Randy Orton of eISL needs to strike. He needs to score that RKO. But when you're getting the WWE franchisee references, Akar Monteka, he has always been the Brock Lesnar, right? He's one of those players who who welcomes, who says, "Welcome to Suplex City." All he does is just dribbles past the ball and then scores goals for fun. So he has always been a lethal machine for scoring goals. Now, once these two titans collide, who is going to come out as the victor? The masala couldn't be, higher than this, right? At this point, it's going to be so tough for me to digest, especially when I'm really considering prospects of a tie between these two clubs in the co-op match. What do you think? I feel it's going to be a tie. हो सकता है टाई हो सकता है, लेकिन देखिए इधर जिस तरीके के गेम हम लोग को अभी तक देखने के लिए मिले हैं दोनों ही क्लब से, केरला ब्लास्टर्स एफसी, शुभम एंड लोकमान्य पिछले कुछ दिनों पे धीरे धीरे करके हम लोगों को कहीं ना कहीं एक सिंक अप पोजीशन पे आते हुए दिखे हैं। Exactly. जिधर चेन्नई एनएफसी के लिए सिनेरियोज जो है वो सेम रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कभी ड्रॉज हुए, कभी हारे हैं, कभी कभार जीते हैं। तो कोऑप पे मुझे लग रहा है कि शायद ये ड्रॉ ना होके मे बी केरला ब्लास्टर्स के पास जा भी सकता है, बट हाँ ड्रॉ भी हो सकता है, मे बी इधर चेन्नई भी जीते चले जाए, कुछ भी हो सकता है। बट मेरा प्रेडिक्शन तो रहेगा केरला ब्लास्टर्स के लिए। बट जो आखिरी गेम है, आखिरी गेम पे ही जो है वो डिसाइड होने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि अगर इस पे चेन्नई जीत जाते हैं देन रिजल्ट कुछ भी हो जाए चेन्नई क्वालिफाई करने वाले। Yes, if that is also there. That is also there, folks. Because if Chennai FC wins the co-op game, then the third game is going to be for mere consolation, and Shubham will have nothing to really fight for, and that is going to be heart-wrenching for me. But this was a good decision that Chennai, in fact, Kerala Blasters FC also opted with, because you want to get your informed look Manu against Chennai FC, try to win that game. But since things have gone a little south for them, this is where they have to make sure that their contingency plan
is there. Shubham will have to win his game along with them winning in the co-op. And looking at the last few performances of Kerala Blasters FC, I think the last time they faced against, if I'm not wrong, they went up against ATK. In fact, I guess they sort of went up against. It was against Odisha FC. They managed, I guess, win that game. No, they still lost that co-op. So yeah, the co-op has been one of those underlying issues for Kerala Blasters FC where they've been struggling. They've been struggling. But tonight is the night where they have to change it. They have to write their own destiny. Do they make it to the playoffs? It's on the cards as Chennaiyin FC looking really strong with the initial attack, trying to find that little room with Lionel Messi, going for that heel to heel and then maybe taking a shot. But that does not happen as KBFC quite successfully defending. हाँ, वो टाइम आ चुका है। इतने वीक से हम लोग बातें कर रहे थे कि यस बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, किसी के लिए उतना खास नहीं चल रहा, कोई शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, लेकिन सारे जो जर्नीज थे वो अभी के लिए होल्ड पे है, क्योंकि जो छठा क्लब है जो उनके साथ जर्नी पे आगे जाने वाले हैं उसमें से 6 क्लब अभी तक मिला नहीं है, तो वो अभी मिलने वाला है, जिसके बीच में एक कोशिश था केरला ब्लास्टर्स की तरफ से कि वो एक गोल करे और वो 6th नंबर ऑफ टीम के पोजीशन पे जाके बैठ जाए, लेकिन वो गोल आया नहीं। डिफेंस काफी शानदार। चेन्नई एफसी देखिए दोनों ही स्लो खेलेंगे, कोई भी इधर ओवर अप्रोच बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि दोनों को ही पता है स्ट्रक्चर बिगड़ा तो हाथ से मैच निकला, और हाथ से मैच निकला तो फिर से नेक्स्ट सीजन बहुत सोच समझ के खेलने की जरूरत है। लियोनेल मेसी हालांकि डिफेंस में ड्रॉप डाउन कर गए थे, फाइनली धीरे धीरे करके ऊपर आते हुए उनको एज अ प्ले मेकर यूज किया जा रहा है। मेसी ये सेव किए हाउ इस तरीके से। Oh God, that shot had Carmen Tikka written all over it. Typical Carmen Tikka chance, and yeah, that was a save that was much needed. Van der Sar coming for the rescue. And a little bit of a correction here, folks. The last time Kerala Blasters FC faced off was against ATK Mohun Bagan, and they had won that co-op. And it was again a draw for Lokmanu against Vicky. But still, they won that co-op, and then we know Shubham what he did. So coming back into this discussion, Kerala Blasters FC have been improving. A Trivela going off far. I think it was Shubham trying to take that effort, and I take it with open arms, right? Because at this point, if one of these goals go in, because had it been like 2-3 months earlier, Trivela shots were the meta. Everybody was going for those shots, and then it has been nerfed. But we have still seen a few Trivelas in this eISL as well. I think Imad has scored one out of Maldini, if I'm not wrong, and a few other players have taken a lot of efforts. So we've seen those finesse shots outside the box. We've seen those Trivelas go in, and Kerala Blasters FC trying a different route where Chennaiyin FC have been looking quite dominant in terms of the possession game right now. बिल्कुल देखिए केरला ब्लास्टर्स ऐसी बार उनके तरफ से एक ही कोशिश हो रहा है कि वो एक गोल एटलीस्ट स्कोर कर दे। इस बार पास भी किया गया था, प्रॉपर सिंकअप दिख रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने जस्ट गोल खाते खाते बच गए वैन डे सार की वजह से, द गॉड वैन डे सार एज ऑफ नाउ, वो चाह रहे होंगे कि और नहीं और अटैक नहीं झेलना चाहते हो। और देखिए बॉल छीना जाएगा, रोनाल्डिनियो के पास बॉल है, और जब आप कोऑप खेलते हो तब रन निकालना कहने के इजी है आपके लिए, अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आप अपने खुद के हिसाब से आप रन निकाल सकते हो। कभी कभार क्या होता है सिंगल खेलने पे कि कौन सा प्लेयर कब जो है वो रन निकालेगा, वो थोड़ा डिपेंड करता है आई के ऊपर, लेकिन जब आप कोऑप खेल रहे हो तब रन निकालना कहने के थोड़ा आसान होता है, तो काउंटर पे आप बहुत अच्छे से जा सकते हो, जिसका फायदा तो हालांकि अभी के लिए उठा नहीं पाए चेन्नई एफसी, बट बॉल उनके पास मौजूद। ज़िडान टू रोनाल्डो, नो
नो पास करने की कोशिश किया था बट वो डिफ्लेक्ट हुआ और वैन डे सार के हाथ। Yeah, those individual moments coming in for Chennai FC, and this is where I think Kerala Blasters FC, they've come prepared. They understand that they're going to be taking majority of their chances with Kaman Tikka, who's usually one of those players who kind of tends to get in the box and then just trying to dribble past the defenders and then take a shot. So they're exercising extreme caution over here. On the other hand, we've seen some variations from Kerala Blasters FC that they've gone to utilize those wings, and now this could be a glorious chance for them. Went for that step over, but no. Ashraf Hakimi comes in at the right nick of time, just gets that tackle on, and there you go. Possession again being lost in Kerala Blasters FC, and a battle between them against Chennaiyin FC. We haven't found anybody just breaching through the other's defense. There have been a few shots taken over. The best chance coming out of Chennaiyin FC, but Van der Sar for KBFC making that rescue. But tonight, this is where very number chance going against the Yellow Army. It's going to be so difficult to find a conclusive, decisive winner over here as pacing in through that right wing with Mbappe. Will go for a cut back towards Ronaldo. Now with Hakimi, passes it on towards Zinedine Zidane. The final attack of this first half has been foiled. And there you go, the first half whistle blows and still the scoreline 0-0. फर्स्ट हाफ के बाद अभी भी कोई भी गोल किसी भी तरफ से नहीं आया बट जो दो शॉट आए चेन्नई एफसी के तरफ से दोनों शॉट्स पे ही कहीं ना कहीं केरला ब्लास्टर्स एफसी के रूह जो है वो कांप चुका होगा स्पेशली वो पहला वाला जिसपे मेसी ने शॉट लिया था अभी भी गोल 0-0 कैसे है मैं तो शॉक्ड हूँ क्योंकि जिस तरीके से वो सेव था वैन डे सार की तरफ से यूजुअली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन मेरे पास भी वैन डे सार है और वो तो ये पकड़ ही नहीं सकता तो दूर दूर की बात है तो या लाइक वैन डे सार लकी थे कहीं ना कहीं कहूंगा केरला ब्लास्टर्स एफसी उस पोजीशन पे और उसके बाद उनके तरफ से भी एक शॉट लिया गया था जो कि शॉट ऑन टारगेट भी था बट अनफॉर्चुनेटली वो गोल नहीं हुआ बट अभी बाकी 45 मिनट्स कोई भी तरफ गोल नहीं आता है तो ड्रॉ पे खत्म होगा एंड डिसाइडर होगा आखिरी गेम देन क्लाइमैक्स की कोई हद नहीं रहने वाली है एकदम अलग लेवल पे चला जाएगा ये मूवी या फिर ये पूरा सिनेरियो जो चल रहा है स्टोरी लेकिन अगर इस पे एक गोल भी चेन्नई एफसी स्कोर कर देते हैं देन कहानी पलट जाएगा और चेन्नई के लिए पूरे चेन्नई वासियों के लिए खुशी का लहर आ जाएगा Yeah, because the course that we are on at this point, Chennai FC could still, settle for a draw in a co-op. And even if the third game also ends as a draw, it's still fine for them. They still go on to qualify as the sixth team making it to the playoffs. But for KBFC, they have to do something out of the box, right? They need to find that small opening, need to thread that needle, need to stay alive in this series, and for that to happen they have to go on to win the next two matches, no caps. And Chennai FC looking calm, poised, and same is the case with Kerala Blasters FC, but surely at a point somebody will make that mistake from either of these clubs and somebody's going to score and someone's going to concede. That's going to be the storyline. Who is that going to be? That's the question that we are yet to find answers for. Nice pass on towards Mbappe. From here, passes it back towards Jairzinho. We know what Jairzinho had done for Lokmanu. Can he do it again for both these lads with Ruud Gullit? Oh, that's a nice opening. Directly goes for the shot, and this is where Kerala Blasters FC strike. 1-0 up, but it's too early to celebrate. You can see the players still quite determined. They know the job's far from being done. But a nice start nonetheless, and they are 1 goal up. And this is the point where we've seen Kerala Blasters FC be at the most vulnerable. After scoring a goal, they have that tendency to concede one, and they need to hold on for at least for the next 2 minutes. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग माहौल पे ये गोल आया है बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पे ये गोल आया है और केरला ब्लास्टर्स एफसी वो जानते हैं वो अपने
ड्रीम्स की तरफ एक पैर रख चुके हैं। ऑन द अदर हैंड चेन्नई एफसी अभी भी कामली पूरे सिचुएशन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अभी भी उनके पास बहुत सारे चांसेस हैं। और इस बार बन गया था मौका, लेकिन डिफेंस काफी बेहतरीन तरीके से बने थे। और देखिए एम्बापे के साथ रन लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा भागने की कोशिश करेंगे। यस, लिया गया। राइट पे आ सकते हैं सर्जिनियो, लेकिन उसके पहले तो वर्जिल वैन डाइक को इधर पार करना था, जो कि हुआ नहीं। बट सर्जिनियो की तरफ से देखिए क्या शानदार था ये पास, जिसकी वजह से बॉल अभी भी केरला ब्लास्टर्स के पास। क्या कैप्टेविया या टुवर्ड्स जॉर्जिनियो, एकदम साइड पे ही रन निकाले थे। रुडली कोशिश Oh, थोड़ा ज्यादा कर गए, थोड़ा ज्यादा होल्ड कर गए बॉल को, नहीं तो एक अच्छा मौका बन रहा था। overthinking. Kerala Blasters FC need to just calm down their minds at this point. Heck, even take a pause. And you know that you're one goal up. You have to maintain that. And we know, majority of the players have had the tendency to concede, and this happens. And almost were on the verge of conceding one over there in that previous attack by Chennaiyin FC. But Kerala Blasters FC have kind of taken that momentum back. Now they're on the driver's seat. They're looking much better in terms of how they've been playing their co-ops. And this could be a huge, huge upset for Chennai FC if they do not win this one. With R9 trying to beat through the defense, but no, this defense looks impregnable at this point. Looks very firm. But Chennai FC, it's gonna take some magic from Kamantika and Naveen to convert this into an equalizer. With Kylian Mbappe, nice pass. Oh, barely, almost puts, Oh! but no, no. Tika in utmost disbelief there, and this is a tackle. Even if he gets a card for it, it's fine. Completely gutted with how that chance was squandered. With 15 more minutes remaining into the game, Kerala Blasters FC need to score one more. And for Chennai FC, they need to find that equalizer. Oh, it's such a nail biter one. आह, जिस तरीके से ये गेम चल रहा है, आई थिंक अगर आप हार्ट के पेशेंट हो और आप चेन्नई को सपोर्ट करते हो या फिर केरला ब्लास्टर्स को सपोर्ट करते हो, तो ये गेम आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस पे झटके आते रहेंगे। बट अगर आप न्यूट्रल हो, तो शायद ही कोई होगा इस पूरे व्यूअर्स के मंडली पे या आपसे ज्यादा कोई एंजॉय कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा न्यूट्रल अगर कोई इस गेम को देखेगा, वो अलग लेवल पे जाके एंजॉय करेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से एक कट थ्रोट मुकाबला चलता हुआ, कोई भी एक सिंगल चांस देने के लिए राजी नहीं है। और जिस जगह पे लग रहा था कि चेन्नई एनएफसी एक गोल कर देंगे और जीत जाएंगे इस गेम पे, तो पूरा सील्ड अप हो जाएगा, उसी जगह पे ट्विस्ट आया और केरल ब्लास्टर्स से इधर से गोल करके गए। तो बहुत बहुत ज्यादा शानदार सिचुएशंस, और नेक्स्ट गेम देन सच में डिसाइडर होगा और बहुत मजा आएगा फॉर श्योर। बट एज ऑफ नाउ, ये जो पॉज लिया गया था, इस पे चेंजेस तो बहुत सारे हुए होंगे। केरला ब्लास्टर्स एफसी, उनको पता है कि एक छोटा सा भी गलती उनके लिए भारी पड़ सकता है। और देखिए डिफेंसिव अप्रोच, जिस तरीके से फॉर्मेशन पे इधर चेंज किया गया है, मिडफील्ड पे प्लेयर इंक्रीज किया गया है, एंड उसी के साथ 5 एट द बैक जा रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि केरल ब्लास्टर्स एफसी वो बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहते। एक गोल आ चुका है भाई, इसको बचाओ और नेक्स्ट गेम पे मूव ऑन करो, नेक्स्ट पे देखा जाएगा। तो ज्यादा एम्बिशंस वो नहीं रख रहे, वो सेफ खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए Yeah, रिजल्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप exactly. कुछ ग्लोरियस करो ना करो, रिजल्ट अगर आपके पास है तो आप खुश हो। तो वही चाह रहे हैं अभी केरला It ब्लास्टर्स। kind of takes me back, TT, to that horror show, if you remember. East Bengal FC against Kerala Blasters FC in that co-op game. I think they were leading with 2 goals, and suddenly in the final 10 minutes, they conceded two, and it kind of went down to be an equalizer. And then, Kerala Blasters FC kind of lost out on those points. So, yeah, at this point, now Kerala Blasters FC, they have been amazing on their defenses so far. Can they keep holding on for the next 15? Well, a free kick, a shorter one with Ruud Gullit.
can see, look at the numbers on that defense, completely swarming. How do Chennaiyin FC break through that? Could see that tension. Look at that reluctancy in trying to pass, not taking any risky options. Nothing experimentation going on over here. As with Erling Haaland, you can take those longer strides, you can try to score a goal, but with Virgil van Dijk still being present over there, that attack was stopped, but still has kept them in contention for another one. With Ruud Gullit on towards R9, Maldini trying to fight for the ball with Ronaldo, but Pele steals it away. And now few more attacks remaining for Chennaiyin FC. They will have to make it count, but Kerala Blasters FC already getting their defense numbers back on. And this is where Chennaiyin FC, with an archer's task of trying to get through with Kylian Mbappe, just twisting and turning, bobbing and weaving, somehow have kept the ball on the attack with Pele. Look for that run. And the worst thing that could have happened was a pen, but that was a fair tackle. And now they're up for counter-attack. गोल होगा और हुआ लाजवाब, और उसी के साथ फाइनल नेल इन द कॉफिन। ये गेम के लिए तो सील कर चुके इस पूरे रिजल्ट को विद 2 गोल्स। एंड केरला ब्लास्टर्स एफसी एक पैर कहीं ना कहीं बढ़ा चुके हैं, रख चुके हैं, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट गेम पे अगर चेन्नई एफसी जीत जाते हैं देन चेन्नई एफसी पूरा क्वालिफाई कर जाएगा। बट हाँ, एक उम्मीद की किरण जग चुका है और इस बार वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। काउंटर पे चेन्नई एफसी, टाइम ज्यादा है नहीं, 87 मिनट में पहुंच चुके हैं ये खेल, और फिर भी कोशिश किया जा रही है उसे भी। और रोनाल्डो फिनिश 88 मिनट में, ये कमबैक हो जाएगा। Hog the ball. Yeah, Kerala Blasters FC, you need to hog the ball. This is where, even if the earth goes falling down, no matter what people say, you need to hog on to possession for 1 more minute. Just keep it on Van der Sar. No hurries. Keep things slow. Play the ball. You cannot afford. Oh, there. Yeah, it's done and dusted. It's done. Kerala Blasters FC just getting that win with that narrow margin. 5 more minutes. Had they been there, I think Chennaiyin FC could have netted 1 more in through. And that could have been an absolute nightmare for these lads. But yes, like you said, TT, Kerala Blasters FC still breathing, still hanging on, right at the precipice of achieving that playoff slot or being pushed over from the cliff by Chennaiyin FC. Because if Karmantika goes on to win the next matchup, then Kerala Blasters FC, everything gets spoiled, everything goes down the drain, and it shatters. And they will have to accept and embrace that reality. But if Shubham can get a victory or maybe even a draw, then we would see Kerala Blasters FC pulling off the biggest comeback of eISL Season 2 so far. You could see with that second goal, Lok Manu made sure, gave that reassurance to all his fans that yes, they have come for that ultimate prize. They have come for glory. And this is one of the best performances we have seen in a co-op matchup from KBFC so far. And what a time to finally get online, TT. Wow. Like, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पहले ही था, अभी एक्साइटमेंट इतना बढ़ चुका है, आई डोंट नो लाइक मैं क्या कहूँ इधर। वैसे हाँ, थोड़ा सा कहने की एक्सपेक्टेशन था कि इधर केरला ब्लास्टर्स ऐसे जीत सकते हैं, क्योंकि उनके जो पिछले कुछ गेम्स थे इन कोऑप काफ़ी अच्छे गए थे और चेन्नई एफसी के लिए उतना खास नहीं था, तो उस हिसाब से मुझे लगा था शायद उनके पास आएगा। बट ये जा चुका है ऑलरेडी, ये हो चुका भी पास्ट। अभी देखना है हमारा फ्यूचर, बट उसके बीच में स्कोरबोर्ड भी आ जाएगा, जिससे कि आप लोगों को कंफर्म कर देंगे कि या जो सिनेरियो है, पहला गेम था 2-2 के साथ एकदम इक्वल, सेकेंड गेम 2-1 के साथ जीत गए, बट इस बार केरला ब्लास्टर्स एफसी तो सिचुएशन जो है इंटरेस्टिंग हो चुका है। ड्रॉ होता है तो केरला ब्लास्टर्स एफसी के पास, अगर केरला ब्लास्टर्स जीतते हैं तो भी उनके पास, लेकिन अगर जीतते हैं चेन्नई देन जाएगा चेन्नई के पास। तो अभी तक जो सिनेरियो इम्प्लीमेंट हो रहा था चेन्नई के लिए कि अगर ड्रॉ होता है
तो भी चेन्नई के पास आने वाला है, वो और इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला क्योंकि केरला ब्लास्टर्स एफसी अपना पहला विन इधर से निकाल चुके हैं। At this point, kind of takes me back to the previous week, right? Where Chennaiyin FC faced Jamshedpur FC, a club that had no chances on, qualifying or making it to the playoffs. But they still managed to defeat them. And this is where the debate comes out. Dhikka Town had lost that individual battle against an out-of-form Arvin. That was a 2-1 Yeah. scoreline. So we have to also remember that because we had said if Chennai FC had won that match then and there only, then things could have been sorted, right? They would not be playing under so much tension. Now, Karman Tikka, again, so much responsibilities on those firm shoulders. Can he pass through Shubham? But, well, the Viper is out for blood tonight and he is all coiled up, ready to strike. Because I had this early morning chat with Shubham and he said, you know what, Fixes? I have been so close this season to making it to the playoffs, and no chance on earth am I gonna deny myself from that. And I'm gonna win my match no matter what were his claims. One side you've got that hot-headed Shubham, and then on the other, a very calm, collected Kamantika, who is right now feeling that heat. But under that extreme temperature, does he crumble? Does he melt? Or he just shines above all and goes on to make sure that Chennai FC do not miss out on playoffs. That's the drama. That's the storyline that's been building up so far. I'm literally having goosebumps. So Hindi में जो कहावत है, रोंगटे खड़े हो चुके हैं, because this is the moment, right? This is it. Because after this match, TT, we're gonna find that last club who makes it to the playoff. That 6 spots still up for grabs, and either of this team makes it. Is it going to be Kerala Blasters FC or is it going to be Chennai FC? And that is going to ensure what's going to happen, what the outcome of this event shall be. But yeah, any predictions, TT, that you would want to make before this match begins? प्रेडिक्शन बहुत टफ है इधर करना, लाइक एज ऑफ नाउ इस तरीके से चला है, कमन टिक्का को भी हम लोग कम आंक नहीं सकते, लेकिन देखिए कमन टिक्का को हराना होगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन चुका है फॉर चेन्नई एनएफसी कि उनको जीतना ही जीतना है, अभी ड्रॉ के साथ भी काम नहीं होने वाला। ऑन द अदर हैंड इस बार एक क्वेश्चन मिल चुका है शुभम को कि वो ड्रॉ के साथ भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो या लाइक मैं तो जाना चाहूँगा एक ड्रॉ के साथ, मे बी ये एक ड्रॉ पे ख़त्म हो जाए क्योंकि दोनों ही काइंड ऑफ सेम प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं जिस तरीके से खेलते हैं, और दोनों ही बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं ओपोनेंट के मेंटेलिटी के साथ। अभी देखते हैं क्या आउटकम आएगा। मेंटली प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होगा चेन्नई एनएफसी को। Yeah. And the pressure on Kerala Blasters FC is going to be no less, to be honest, because yes, this is their do or die chance, for both these clubs, right? At this point, both of them have to win because I think at some point, Chennai FC at this point, in fact, Kerala Blasters FC at this point, they can afford to be settling down with a draw, because if this match ends in a draw, then eventually they will win the series and they'll take those 3 points. Along with that, they'll qualify for the playoffs. But for Chennai FC, no matter what happens, they will have to win this one. And this is where every thought sort of starts reeling in, right? Everything sort of comes down, and I'm kind of just waiting. Anxiety is at its peak at this point, just to find out which club is going to make it, which club is going to seize that final spot. Because at this point, to be honest, it could be anyone. And it is going to take some magic. It is going to take some luck. It is going to take the best FIFA out of these two players to ensure that their club qualifies. और श्योर, लेट्स सी क्या होता है। और एज ऑफ नाउ देखिए, जब तक ये गेम चालू नहीं हो रहा तब तक कुछ भी कहना बहुत टफ है। एंड इधर दोनों ही साइड से, इधर वो चेन्नई एनएफसी हो या फिर केरला ब्लास्टर्स एफसी, या आखिरी गेम उनको जीतना होगा, उनको इधर जीतने की कोशिश करना होगा, क्योंकि ये आखिरी मोमेंट भी हो सकता है उनके लिए पूरी eISL सीजन 2 के अंदर।
मैचअप इन दोनों क्लब्स में से कोई एक क्लब का ये आखिरी गेम होने वाला है इस पूरे सीजन के अंदर। तो कौन है वो पता चल जाएगा इस गेम के बाद। Yeah, to find out the final missing jigsaw in our puzzle of the playoffs of your folks, Chennaiyin FC versus Kerala Blasters FC, the final showdown that decides who makes it and who breaks here and now itself. As now Chennaiyin FC with that intent of aggression right now, just trying to break in through that box. But yes, Shubham has contained Kamantikka. Chennaiyin FC from left to right, Kerala Blasters FC from right to left. Anything can possibly happen in this matchup. Shubham needs to figure out a way to deal with him, and Kamantikka, he needs to do what he does best, that is score goals. For sure, let's see what happens. And as of now, scenarios जो है वो बहुत ही ज़्यादा सा हो जाता हुआ for the side of Chennaiyin FC, and Kamantikka knows that. Kamantikka have to do like something जिससे कि उनको एक गोल मिले. But let's see क्या करेंगे. Finally, Kamantikka the Tinker Town वापसी कर चुके हैं इस शहर पे. With his goal, he just secures his slot as of now as a sixth contender of the playoffs. But let's see क्या इधर केरला ब्लास्टर्स ऐसे शुभम तम इक्वलाइजर दाग पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो इधर से इक्वलाइज नहीं करेंगे then it's over for Kerala Blasters FC. बस वो एक मैच जीते तो है, लेकिन अगर वो ये हार जाते हैं दैट मींस ये ड्रॉ के साथ खत्म होगा पूरा ओवरऑल मैचअप. और अगर ये ड्रॉ के साथ खत्म होता है देन वी नो कि चेन्नई एफसी को मिलेगा 1 पॉइंट. केरला ब्लास्टर्स विल गेट 1 पॉइंट एज वेल, बट वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा कि वो इधर पहुंच पाए प्लेऑफ्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 11 पॉइंट्स में बैठे हैं चेन्नई एफसी और उनको 1 पॉइंट मिलेगा तो वो 12 पे पहुंच जाएंगे एंड वो बन जाएंगे 6th कंटेंडर फॉर द प्लेऑफ्स. शुरुआती 15 मिनट्स बहुत ही ज़्यादा टफ जाता हुआ उनके लिए, और इस जगह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है केरला ब्लास्टर्स के लिए फिक्सर्स. Yeah, of course. I mean, especially after conceding that, you could see Shubham under a lot of pressure. And Kamantikka, at this point, he needs to go crushing him down. At this point, he must be looking for another one. Has to be quite composed. Wanting to go for that elastico, but did not go through. At this point, Shubham needs to find an equalizer. He cannot let Tikka get away with this. And had almost broken free, but a little bit of a touch. Making sure he wants to sort of build up his attack over here. And that run with R9, he has to go in, has to take the shot, and indeed, he does. And suddenly, KBFC are right back into this game. Oh my goodness, a goal at such a crucial junction where they cannot accept defeat at all. A draw is still doable. And Kamantikka needs to now rethink of his prospects of attack. He needs to make a few changes. And that is exactly what he's going to do. Both these players going for a 4-3-2-1 formation. And now he's got to try some other variations. You know, he's got to try maybe, constantly just going for that, maybe that extra pass, or go shoot from across, or try for a trivela or something else. Because those repetitive attacks of using one player is something that Shubham is kind of aware and is kind of expecting. So if Kamantikka does something else, then you never know. We could see Chennaiyin FC becoming the victors. We're in the stage now जिधर circumstances जो है वो हर एक गोल के साथ इधर चेंज होता हुआ दिख रहा है, और एक गोल केरला ब्लास्टर्स की तरफ से वो उनको लेके चला जाएगा प्लेऑफ्स में, एक गोल
चेन्नई एनएफसी की तरफ से वो लेके चला जाएगा चेन्नई एनएफसी को। क्या होगा ये फर्स्ट हाफ अभी तक तो बहुत ज़्यादा एनिमेटेड रहा है और अभी तक ये पिछले गोल के बाद केरला ब्लास्टर्स के लिए तो सक्सेसफुल रहा है कि वो ड्रॉ के साथ भी फिनिश कर सकते हैं। सो उनका तो उतना ज़्यादा टेंशन है नहीं, बट बिल्डअप प्रॉपर होना ज़रूरी। कैप्टेविया बहुत शानदार, लाइक बॉल कंट्रोल काफ़ी देर तक कर रहे हैं और देखिए कोई भी इधर जल्दबाजी नहीं है केरला ब्लास्टर्स की तरफ से, वो जस्ट होल्ड कर रहे हैं और उनको जब दिखेगा कि हाँ इधर से एक पोजीशन है, गैप बन रहा है, वो जस्ट थ्रू खिला देंगे। Yeah. No, at this point, one thing for sure, Shubham, he's being quite calm and composed in terms of his defense and his attack both. And this looks to be a golden chance. Looking for that cutback, maybe trying to dribble past, and this is what I was concerned about, right? Where I kind of made that point that Kamantika needs to do something out of the blue. He cannot just rely on that one play. He needs to go for that extra, pass. He needs to create that space. An amazing dribbler, an amazing finisher. It's like that. It's like Karim Benzema. But well, at this point, KBFC need to just hold on. But they found that equalizer. They've been doing really good. But Shubham needs another goal and maybe a goal after that to sort of ensure that even at the worst case, this ends as a draw and they head on into the playoffs, because Kerala Blasters FC, they have come out for everything. They cannot turn their face back and accept defeat after making it so close to the playoffs, because this is one of those clubs that we sort of had ruled their possibilities, their chances out, and they every single occasion fought back. And then you've got Chennaiyin FC on the other side, TT, who were supposed to be one of the favorites in this eISL, especially with Naveen and Karmantika teaming up. And never had they even imagined that they would be in such a situation where they would be fighting for qualification for the playoffs. हाँ, जितना देर होता जा रहा है उतना ही ज़्यादा टेंशन बढ़ता जा रहा है चेन्नई एनएफसी के फैंस के लिए और चेन्नई एनएफसी के लिए भी। एज ऑफ नाउ ये जो सिनेरियोज है उससे तो यही चीज़ पता चल रहा है कि केरला ब्लास्टर्स एफसी सिक्योर करके रखे अपना प्लेस और 6th पोजीशन एंड प्लेऑफ्स। फर्स्ट हाफ फाइनल विसल इधर बज चुका है और विद दैट we know just we have 45 minutes left and Chennai NFC have to do something like जिससे कि वो इधर कम बैक कर पाए। एटलीस्ट अगर वो एक गोल कर भी देते हैं तो उसको डिफेंड करो या फिर ऑल आउट चले जाओ जिधर से आपको एक के बाद एक गोल्स मिलते रहे। बट उस पे एक का प्रॉब्लम है कि वो कंसीड भी कर सकते हैं। लेट्स सी क्या क्या रहता है इधर प्लानिंग चेन्नई एफसी की तरफ से। It's that one mistake from somebody, because I'm getting that feeling that this is not going to end with a mere draw, right? Somebody has to score that winner. And especially with how both these players are playing, they've been very, very careful with their attacks. We have seen two variations. On one side, we have Karmantika doing his age-old tactics of trying to get into the box, perform that skill move, break free, score that goal. And then we've got Shubham, who's sort of, trying to piece every single move together, trying to build that attack and striking when the iron is hot. So far, I've liked Shubham's chances. If Karmantika pulls off something, he needs to pull out a rabbit out of his magic hat. Otherwise, it might all go in vain. But, at this point also, Shubham cannot afford to give away the ball like that. Thankfully, he's managed to retrieve it back. But, you could see that tension. You could see that nervousness starting to creep in. Even for the Viper, it is too much to handle. वाह, एज ऑफ नाउ सिनेरियोज देखिए, शुरुआत हुआ था चेन्नई एनएफसी के गोल के साथ, तो चेन्नई एनएफसी खुश तो बहुत थे। कमंटिका बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से सेलिब्रेट किए गोल को, लेकिन वो जब कंसीड किए 29 या 30 मिनट के ऊपर फिर से एक बार प्रेशर बन चुका है।
अभी सिर्फ और सिर्फ 38 मिनट्स बाकी हैं इस पूरे एंटायर गेम के अंदर, और शायद आईएसएल सीजन 2 के अंदर इन दोनों क्लब्स में से एक का, क्योंकि अभी भी पता नहीं है कि कौन क्वालिफाई करने वाला है, क्योंकि एक गोल का फासला है बस। एक गोल चेन्नई दाग दिया तो चेन्नई जाने वाले हैं, किसी ने नहीं दागा फिर तो केरला जाने वाले हैं, और अगर केरला ने दागा तो वो तो फॉर श्योर जाने वाले हैं। ओह माय गॉड, इस बार काफी अच्छा कोशिश था, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से सेव किया। बट गोलकीपिंग में आप देख रहे हैं गोलकीपर आज तो चेंज है, धोनोमा कर रहे हैं गोलकीपिंग, और ये लाइक पहली बार के लिए किया गया है इम्प्लीमेंट। Yeah, I mean, we've seen a few players get up Donnarumma, and I think it has been Shubham so far. I don't know if that's going to make a whole lot of difference. If he's onside, then surely Shubham, come on. This might come down to haunt him. Such a golden opportunity, and whiff as now Tekka out for vengeance. Needs to find that one goal more, and needs to keep Chennaiyin FC still in the race for the playoffs. But wow, Hakimi makes a save of his life, just steps in and takes control with Jude Bellingham. Shubham under extreme duress. Oh my goodness, you could see the sparks flying around. And instantly they take a pause. Take it. Take that breather. Make those adjustments. Get right back in, because, hey folks, we want to see somebody winning this game. देखिए, ये पॉज जरूरी था दोनों के लिए, क्योंकि एक तो जीत रहे हैं कहीं ना कहीं, लाइक इस गेम पे तो ड्रॉ हो रहा है बट ओवरऑल पे जीत रहे हैं, और एक को पता है कि जस्ट एक गोल बाकी है, एक गोल दूर है उनके क्वालिफिकेशन के लिए। सो ड्रामा हो सकता है, वो आखिरी मोमेंट आखिरी मिनट गोल आ सकता है। लास्ट मिनट विनर्स हमेशा बहुत ज्यादा फैंस के और लोगों के जो वो दिल तोड़ के जाते हैं। तो क्या होगा, किस तरफ से आएगा गोल्स? मुझे लग रहा है इस गेम पे कम से कम और एक गोल तो है ही है, लेकिन वो किस तरफ से आएगा वो अभी के लिए श्योर नहीं है, क्योंकि दोनों ही जी जान लगा के कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक गोल मिल जाए। Oh my goodness, I'm already having goosebumps, and I'm pretty sure so are the viewers out here. All just waiting, maybe to see their favorite club win, or just to witness an epic storyline being made. Kerala Blasters FC, if things remain as it is, if they're both leveled up, then they go on to win the series and pull off one of the biggest comebacks of eISL in not just season 1 but also season 2 included. So clearly a lot on the line for Shubham and Lokmanu. Lokmanu has done his job. Now it rests on Shubham's shoulders. What can he pull off? Or is it going to be the assassin Karmantika? One shot, too many. And we've seen Karmantika kind of going for those power shot finishes from that position. Quite ambitious in his approach, but that's not going to work against Shubham. And Shubham, we've seen him, constantly trying to keep the passing game on, keep as much possession, try to build that tension around Kamantika, force him into making mistakes, and then strike. Well, that's what Vipers do, don't they, TT? बिल्कुल, और देखना होगा। देखिए आखिरी 20 मिनट टाइमर इधर चलता जा रहा है। लास्ट 20 मिनट्स वॉच एनएफसी टू कम बैक। अगर वो कर पाते हैं एंड इट्स गुड, नहीं तो फिर चांस मिलेगा नेक्स्ट सीजन पे। फिर से एक पॉज, आई थिंक फ्रेश लेग्स आते हुए देखने के लिए मिलेंगे दोनों ही साइड से। और केरला ब्लास्टर्स एफसी फॉर्मेशन देखिए, फॉर्मेशन इधर चेंज हुआ है। डिफेंस पे इस बार सिर्फ 4 नहीं, लोगों को 6 प्लेयर दिखेंगे, क्योंकि जो उनके 2 मिडफील्डर्स हैं वो भी कभी कभार ड्रॉप डाउन करते हुए दिख रहे हैं। और जब आप इस फॉर्मेशन के साथ खेलते हो, देन आपके पास एक वर्सिटैलिटी या फिर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो जाता है कि आप आपके जो फुल बैक्स हैं उनको आप आगे भेज सकते हो ओवरलैप पे, फिर भी आपका जो डिफेंस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता।
तो सेम साइड पे रहते हुए वो अटैकिंग भी खेल सकते हैं और डिफेंसिव भी खेल सकते हैं। तो स्टेबल एक का फॉर्मेशन के साथ जा रहे हैं केरल ब्लास्टर्स एफसी, बट आउट ऑफ कंट्रोल गया बॉल बैकलाइन के बाहर, और उसी के साथ चेन्नई एफसी के पास बॉल। It's so difficult. It's so difficult over here to make any prediction. I mean, might as well ask our viewers, who do you think is gonna make it? Is it gonna be Kerala Blasters FC or Chennaiyin FC to the playoffs? No matter whosoever does it, it's gonna be really interesting because next up is going to be LAN. Now Shubham, let's see what changes has he made. Has gotten a Eusebio, just dribbling the ball past with Jude Bellingham. Wanted to find Erling Haaland, but realized that pass was well read by Kamantika as he forces out an attack, tries to break free with his own Erling Haaland, and we know this man gets too physical, just beats through defenders and makes it look funny. Now with just mere 13 minutes remaining, oh my goodness, anything could happen. The tension is off the charts over here. Kamantika, he's been under this situation multiple times and he has gotten glory. And they're offside. He cannot afford to make such mistakes right now. At this point, look at the pressure being applied. Still, Kerala Blasters FC keeping the ball in their possession. TT, where are we going? Where are we heading at? Oh my God. ये देखना भी बहुत ज्यादा, लाइक देखते हुए भी हम लोग के ऊपर प्रेशर फील हो रहा है। आखिरी चांस, आखिरी मौका, अभी भी गेम को बचा के रखते हुए, अभी भी चेन्नई एफसी को एक आखिरी होप देते हुए कि आप एक गोल कर लो बस और आप जा सकते हो, बट बचा हुआ है क्लॉक पे सिर्फ 8 मिनट। बॉल हॉक करने की कोशिश किया जाएगा, बॉल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, कॉर्नर पे ही घूमते रहेंगे केरल ब्लास्टर्स ऐसे। शुभम तम देखिए टाइम वेस्ट, बट फाइनली 5 मिनट अभी भी है। क्या लास्ट मोमेंट कुछ ड्रामा देखने के लिए मिलेगा? क्या लगता है फिक्सर्स? At this point, anything is possible. And yeah, it feels like one of those intense foot champs games. Somebody going try hard, somebody trying to go sweaty and ratty. But at the same time, Kamantika, this could be one of his final strikes. That could change it all. He's taking his time with the build-up. Has no room for error. Has found room with Mbappe. Takes that shot. No way. Donnarumma saves that. But the attack still alive with R9. With just mere 1 minute remaining. And oh my God. Shubham has gotten the possession back. And no way he's going to give it away anymore. He's going to eat away every single second of that 2 minutes remaining. He's going to make sure that it ends as a draw. And with that, Kerala Blasters FC pull off the unthinkable. And yes, yes, they have done it, folks. Kerala Blasters FC have managed to make it to the playoffs. The Manjapada Tuskers, against all odds, when everybody had disregarded them, when everyone had discarded them, they strike back. Of course, this match ends as a draw, but 3 points for Kerala Blasters FC, and they go whizzing past Chennaiyin FC. Oh, what a match it was. क्या मैच था, एज अ व्यूअर, एज अ न्यूट्रल फैन, जितने भी लोग एंजॉय किए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस कि आपको ये गेम देखने का मौका मिला है। क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स आज जिस इंटेंसिटी के साथ खेल रहे थे, जिस जगह पे, जिस लेवल पे इन्होंने परफॉर्म किया, नॉट ओनली दो प्लेयर्स, दोनों क्लब के जितने भी चारों के चारों प्लेयर्स अपना बेस्ट गेम दिखाने की कोशिश था। लेकिन कितने दिन इधर कमेंटेक आगे लेके जा पाएंगे? चेन्नई एफसी शुरू से कंफर्टेबल पोजीशन पे थे, टॉप 6 पे बने हुए थे, आज भी वो टॉप 6 पे थे, लेकिन सिर्फ यही चेंज था कि केरला ब्लास्टर्स एफसी, उन पे कमबैक का जुनून था,
कमबैक उनको करना ही था। पिछले गेम से ही लग रहा था कि यस माहौल बन रहा है धीरे धीरे, और फाइनली वो तूफान आया, चेन्नई ने इसी को उड़ा के लेके चला गया। The Hurricane just sweeping it out, and Kerala Blasters FC making it to the playoffs. As folks, for one final time, let's take a look at the scorecard. And it was that co-op game that differentiated, that one goal that ensured Kerala Blasters FC go through. Hearts broken for the Marina Machans because, hey, Naveen and Tikka, we're not going to see them in playoffs. These amazing lads, the last season, one of them was a champion, the other, the finalist, and they're not going to be there. Such has been the intensity, such has been the level of competition in this season of the eISL. And let's find out who the MVP is going to be as it comes up. It is going to be Lokmanu. The 2 goals against Naveen that he scored. But for me, whoever scored that winner in that co-op game is certainly my MVP. And Kerala Blasters FC, last time Lokmanu tried, being one of the biggest players in the scene, he had failed to qualify. But this time, even after having a rough start, these lads portrayed that never give up attitude, and that is exactly what you need at this level of competition. Just break all doors and make it through the playoffs. Lokmanu and Shubham, congratulations. Tonight is how you party, because tomorrow as you wake up with the new dawn setting in, you've got playoffs on your hands. As folks, we take a look at the leaderboards, as we do have our 6 clubs that have made it to the playoffs, starting off with FC Goa, the table toppers, a club that has not lost a single game, still have one more remaining. We have that epic showdown where we've got FC Goa taking off Northeast United FC tomorrow, their final matchup. We still have Mumbai City FC, Bengaluru FC, their matches remaining. But yes, the top 6 that you see are the ones that have finally gotten their golden tickets into the majestic playoffs that are going to be on land. And from Chennaiyin FC till East Bengal FC, we're going to have to wait one extra season to watch them back in action. बहुत सारे क्लब्स इधर आए, बहुत सारे क्लब्स इधर बहुत शानदार शानदार परफॉर्मेंस दिखा के गए। पॉइंट्स टेबल की अगर बात किया जाए, कुछ कुछ क्लब्स हैं जिनका गेम खत्म हो चुका है, कुछ कुछ क्लब्स थे जिनका गेम आज खत्म हुआ, और बाकी के जो मैचेस है वो कल देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो एक चीज सबके अंदर दिखा वो है जुनून, वो है फीफा के लिए प्यार, और उसके साथ साथ उनका वो ग्राइंड जो इतने दिन से वो करते आ रहे थे। तो ये सेकंड लास्ट डे था और वो भी खत्म होता हुआ है। इतने दिन का ये सफर, हालांकि प्लेऑफ्स है हमारे साथ, लेकिन वो सिर्फ 6 क्लब्स के लिए। बाकी के 6 क्लब्स हम लोग को पता चल चुका है कि वो कौन कौन है जिनको गुड बाय कहना होगा कल। बट हाँ, विद दैट आखिरी में जो कमबैक हुआ केरला ब्लास्टर्स एफसी का, ये पिक था, क्योंकि पूरा सीजन हमने देखा, सब लोगों ने देखा कितना स्ट्रगल किए थे वो। शुरुआत पे मिड पे ड्रॉ करना चालू किया, आखिर में आके जीत के चले गए बैक टू बैक, वो भी 2 और 6 पॉइंट्स। वाओ, That tenacity, that resilience is what makes me fall in love with this game. I mean, Shubham and Lokmanu, just take a bow. And, this is the moments we live for. This is the moments why we love this game, right? Be it real football, be it the real ISL or the eISL, the drama keeps on going. And, well, it is all for you viewers. I hope you loved it. If you did, do not forget to subscribe to the channel, because tomorrow it's the final day of the league stages, and then on the 6th and 7th you would not want to miss the playoffs, would you? But that being said, folks, we are finally done with all the fixtures for the night. What we're going to do is call it a night, because tomorrow we have the last day. We get to see who is where in terms of the point standings, and a lot more drama continues. Till then, you guys take care and have a good night.